Muslim body slams provocation. Muslim groups are now calling out the hate politics and the provocation. Jamiat-e-Hind speaks against provocation and appeals to the youth of the Muslim community to speak for the country and not just the community. Meanwhile, Mr. Owaisi, who is expressing solidarity with Afreen, has refused to condemn hate rant by his own neta, by Imtiyaz Jaleel, who gave a call for beheading of Nupur Sharma. Leaders like Owaisi are being now slammed by Muslim groups who are appealing to people to maintain calm, peace and to not speak against any other community, to just speak for the country and not only keeping the interest of the community in mind. मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो है अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? Well, let's go across to Mohit, who continues to be with us. Amidst all the provocation and hate speeches coming in from irresponsible religious and political leaders, there are some sane voices coming to fore as well. We just heard Shoaib Kazmi, who's appealing to people to speak up for the country, not community. He's also highlighting how leaders provoke people and then they leave, and then the common Muslim man is left to suffer and face the law. Well, you see, we need to just go into the context. Jamaat-e-Ulema-Hind as of now is addressing the press conference in which they have clearly condemned the violence and they have also condemned the insightful slogans that were raised in various protests and also they have completely cut off themselves from the protests and the statements that are being made by various Muslim leaders, and they have said that we should as of now work on peace, and they have also attacked leaders like Asaduddin Owaisi, Imtiyaz Jaleel and others. When they were asked about the question regarding the Jamiat-e-Ulema-Hind General Secretary who called the writers martyrs, he clearly stated that they have been doing this from 70 years, they have been instigating the riots. So some sane voices coming out from the Muslim clergy, they have come out and they have said that such kind of violence is something which should be stopped, and all those insightful statements that are being made by various leaders, they all should be stopped. So this has been the demand from the civil society. Yes, the Muslim clergy, the senior leaders from the clerics, they should all come out and they should appeal for the peace, and they have come out and they have appealed for the peace. So we have to wait and watch what exactly its impact would be on the ground. But as of now, some sane voices finally coming in and they have asked for the peace. They have also hit out at all these politicians who are trying to communalize the whole situation. Because remember, protest is your democratic right, but with certain rights comes the duties. You cannot take law into their hand, and that is what Jamiat-e-Ulema-Hind as of now is saying while they are addressing a press conference. Back to you in the studio. Absolutely, Mohit. Thank you very much for getting us the details. And we are, in fact, trying to get more reactions on this big story. It is very important this message goes out to the Muslim community. Responsible religious leaders now appealing to the community to speak for the country, not just the community. They're also exposing the role of some leaders who incite people, who provoke people, and then the common Muslim man who gets provoked, who hits the streets and participates in protests that turn violent, has to face the law and lands behind the bars. Let's once again listen in to this press conference, this reaction from Jamiat-e-Ulema-Hind. मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और
रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों में छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो है अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? Former UP Minister and BJP leader Mohsin Raza is joining us on the broadcast. Well, Mohsin Raza, it is high time that responsible leaders of the Muslim community, come to fore, appeal to people for peace and calm, and Jamiyat-e-Ulema-e-Hind is doing that job. They are differentiating between provocators. ये समझा रहे हैं लोगों को कि कुछ लोग आएंगे, भड़काऊ बयान देंगे, लेकिन अंत में आप ही को कानून का सामना करना पड़ेगा और आपको जेल में पकड़कर पुलिस डाल देगी अगर हिंसक प्रदर्शन का आप हिस्सा हैं। देखिए, पहली चीज तो ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है। अभी कुछ दिन पहले जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का बयान आपने देखा था, किस तरह का बयान असद मदनी का आया हुआ था और वो क्या कह रहे थे। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की UNO में दिए गए बयान को आगे बढ़ा रहे थे, यहाँ उनका रोना रो रहे थे। आज उन्होंने खैर चलिए देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, देखना होगा, लेकिन ये जो भी चीजें हो रही हैं ये इसके पीछे मैं बार बार कहूंगा एक साजिश है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको एक समान जो भी योजनाएं हमने बांटी हैं 8 वर्षों में, वो अभूतपूर्व योजनाएं मिली हैं, अभूतपूर्व कार्य हुआ है और अल्पसंख्यक समाज को उत्तर प्रदेश में 19% होने के बाद भी 35 से 36% योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया है। तो आखिर ये सारी बातों को लेकर, और फिर ये तो हमारे यहाँ दीन का कोई रोल ही नहीं है, वायलेंस पर तो दीन हमारा डिपेंडेंट ही नहीं करता। हमारा इस्लाम तो मोहब्बत और अखलाक का मजहब है, जिसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद को हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू सम्मान करते हैं। इतना तो अरब में भी नहीं होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान। लेकिन तो देखिए अभी भी बयान ओवैसी साहब की तरफ से आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए वो अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं मोहम्मद जावेद और उनकी बेटी आफरीन के लिए, और एक बार फिर आरोप ये लग रहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ सरकार काम कर रही है। ये इनकी एक साजिश है, ये एक और विभाजन कराने के लिए ये लोग अपनी साजिश में नाकाम होंगे, क्योंकि अब ये भारत, अखंड भारत की विचारधारा के हाथ में है और अखंड भारत की विचारधारा की सरकार चल रही है। अब कोई खंड नहीं करा पाएगा, लेकिन हाँ, ये जो लोग जिस तरह से पीछे से काम कर रहे हैं ये जरूर तय कर लें कि जांचों उपरांत ये जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे, जो लोग इस में फंडिंग कर रहे हैं, जो लोग पीछे से हैं, कुछ के बयान खुल कर आ रहे हैं, कुछ के पीछे से आ रहे हैं, तो ये सारे लोगों को एजेंसियां हमारी पकड़ के जेल में डालने का काम करेंगी। और जो भी उपद्रव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, आप देख रही हैं कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई उन्होंने कहा है सबके खिलाफ होगी जो भी भड़काऊ भाषण देगा। तो इसलिए ये सबको तैयार रहना चाहिए कि जो भी माहौल खराब करेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेगा, उसको जेल जाना होगा। समान कार्रवाई सब पर हो रही है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कानून का हथौड़ा चलेगा। शुक्रिया मोहसिन रजा आपका हमसे बात करने के लिए। दैट वाज मोहसिन रजा, फॉर्मर यूपी मिनिस्टर, हु इन फैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज रिजेक्टिंग एंड रबिशिंग द allegations against the government. A quick break on the broadcast. We'll be back with more updates.